स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन में और आगे एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? 3 consecutive integers दिए जो ऐड करते हैं तो उसका सम 51 मिल रहा है, तो वो इंटीजर्स कौन से होंगे? लेट द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमारे पास है, एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। देयर सम इज 51, उसका सम 51 है। सो एक्स प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 51। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे अभी, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 51। सो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51। x 3 बार है, 3x हुआ, प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 51। नाउ प्लस 3 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। सो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3। सो 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3 इज इक्वल टू 48। सो 3x इज इक्वल टू 48। नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3। So 3x divided by 3 is equal to 48 divided by 3. We get x is equal to 16. 16 3 is 48. So x is equal to 16. So first number is equal to x is equal to 16. Second number is equal to x plus 1 is equal to 16 plus 1 is equal to 17. Third number is equal to x plus 2 is equal to 16 plus 2 is equal to 18. Thus, the required consecutive integers are 16, 17 and 18. Now, second example is 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. 3 consecutive integers दिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम 2 से 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो 74 मिल रहा है। तो वो इंटीजर्स कौन से होंगे? Let the 3 consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2. 3 consecutive integers है x, x plus 1 और x plus 2. According to the condition के हिसाब से तीनों को रिस्पेक्टिवली 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, 74 मिल रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x plus 3 multiplied by x plus 1 plus 4 multiplied by x plus 2 is equal to 74. So 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8 is equal to 74. मल्टीप्लाई और ब्रैकेट ओपन किया तो हमें मिला 2x plus 3x plus 3 plus 4x plus 8 is equal to 74. So 9x plus 11 is equal to 74. नाउ प्लस 11 को ट्रांसपोज करके राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे, माइनस होगा। सो 9x इक्वल टू 74 माइनस 11। सो 9x इज इक्वल टू 63. नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 9, सो x इज इक्वल टू 7. सो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7. Second integer is equal to x plus 1 is equal to 7 plus 1 is equal to 8.
Third integer is equal to x plus 2 is equal to 7 plus 2 is equal to 9. Thus, the required integers are 7, 8 and 9. Next example. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर 154 मीटर है, उसकी लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है. दोनों फाइंड आउट करने हैं, लेंथ और ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ द पूल इज इक्वल टू 154 मीटर. Let breadth is equal to x meters. Now length is 2 meter more than twice its breadth. So length is equal to 2 multiplied by breadth plus 2 is equal to 2x plus 2 meters. Now perimeter of a rectangle is equal to 2 in bracket length plus breadth. So 2 multiplied by 2x plus 2 is length plus x breadth is equal to 154. Now 2 in bracket 2x plus 2 plus x bracket over is equal to 154. ब्रैकेट ओपन किया. नाउ फिर से ब्रैकेट 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ. 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 2x प्लस 3x प्लस 2 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 2. So 3x plus 2 is equal to 77. So 3x is equal to 77 plus 2 transposing to right hand side, it becomes minus 2. So 3x is equal to 77 minus 2 transposing to right hand side. So we get 3x is equal to 75 because 77 minus 2 is equal to 75. Now we have to remove 3 on left hand side. So dividing both the sides by 3. So 3x divided by 3 is equal to 75 divided by 3. So x is equal to 25. Breadth is equal to 25 meter. Now length is equal to 2x plus 2. Length is 2x plus 2. So we put the value of x is equal to 25. So 2 multiplied by 25 plus 2. 25 to the 50. So 50 plus 2. We get 52 meter. Thus the length of the pool is 52 meter. Length of the pool is 52 meter and its breadth is 25 meter. And its breadth is 25 meter. Now next example. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination of rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? लक्ष्मी एक बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ की नोट्स है. उसका रेशियो है 2:3:5. टोटल कैश है 4 लाख रुपीज़. तो हर एक नोट कितने रुपये की होगी? लेट द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी 2x, 50 रुपीज नोट्स बी 3x, रुपीज 10 नोट्स बी 5x. वैल्यू ऑफ 100 नोट्स, रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय 100 is equal to 200x rupees. Value of rupees 50 notes is equal to 3x multiplied by 50 is equal to rupees 150x. Value of rupees 10 notes is equal to 5x multiplied by 10
is equal to rupees 50x. Now according to the condition, value is 4 lakhs. So rupees 200x plus rupees 150x plus rupees 50x is equal to rupees 4 lakh. So 200x plus 150x plus 50x is equal to 4 lakh. Now it becomes 400x is equal to 4 lakh. Now we have to remove 400 from left hand side, so dividing both the sides by 400. So 400x divided by 400 is equal to 4 lakh divided by 400. So x is equal to 1000. So rupees 100 knots is equal to 2x is equal to 2 multiplied by 1000 is equal to 2000. Rupees 50 knots is equal to 3x is equal to 3 multiplied by 1000 is equal to 3000. Rupees 10 knots is equal to 5x is equal to 5 multiplied by 1000 is equal to 5000. Thus, Lakshmi has 2000 knots of rupees 100, 3000 knots of rupees 50 and 5000 knots of rupees 10. Now, next example. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. मेरे पास 300 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का. The number of rupees 2 coin is 3 times the number of rupees 5 coin. 2 रुपये का सिक्का 3 गुना 5 रुपये के सिक्के से है. The total number of coin is 160. Total number 160 है. How many coin of each denomination are with me? हर एक कीमत के कितने कॉइन मेरे पास होंगे? Let the number of rupees 5 coin be x. 5 रुपये के सिक्के x है. The number of rupees 2 coins be 3x. 2 रुपये के सिक्के 3x है. और total number of coin is 160. Total coin 160 है. So number of rupees 1 coins is equal to 160 minus 3x minus x. So number of rupees 1 coins is equal to 160 minus 4x. Now value of rupees 5 coins is equal to rupees 5 multiplied by x is equal to rupees 5x. Rupees 2 coins is equal to rupees 2 multiplied by 3x is equal to rupees 6x. Rupees 1 coins is equal to rupees 1 multiplied by 160 minus 4x is equal to rupees 160 minus 4x. According to the condition, 5x plus 6x plus 160 minus 4x is equal to 300. Now opening the bracket, so we get 5x plus 6x plus 160 minus 4x is equal to 300. So 11x minus 4x plus 160 is equal to 300. So 7x plus 160 is equal to 300. So 7x is equal to 300 minus 160. Transposing 160 to right hand side. So 7x is equal to 140. Now we have to remove 7 from left hand side. So dividing both the sides by 7. 7x divided by 7 is equal to 140 divided by 7. So x is equal to 20. So number of rupees 5 coins is equal to 20 and rupees 2 coins is equal to 3x is equal to 3 multiplied by 20 is equal to 60. Rupees 1 coins is equal to 160 minus 4x
is equal to 160 minus 4 multiplied by 20. We get 160 minus 80 is equal to 80. Thus, I have 20 coins of rupees 5, 60 coins of rupees 2 and 80 coins of rupees 1. इस तरह आंसर हमें मिला. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके.